गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है I2U2 समिट। तो अभी आपको पता है कि 14 जुलाई को फर्स्ट टाइम जो है लीडर समिट कंडक्ट की गई है, लेकिन वर्चुअली की गई है। अभी तक इन पर्सन समिट नहीं हुई है I2U2 की। तो I2U2 एक डिप्लोमेटिक ग्रुप है जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये I2U2 किसने जो है मॉनिकर दिया था, ये आपके जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था। और जब पहली बार वर्चुअली फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे इंडिया, इसराइल, यूएस और यूएई के अक्टूबर 2021 में, तब ये नाम दिया गया था। अब एक्चुअली ये है क्या, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि इंटरनेशनली आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहता है। इसको कुछ लोग इनफॉर्मली वेस्ट एशियन क्वाड, मिडल ईस्टर्न क्वाड या फिर न्यू क्वाड भी कह रहे हैं। बट इसका कोई डिफेंस जो है कोऑपरेशन का कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब इसके अंदर जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन एशिया और मिडल ईस्ट के बीच में किया जाएगा। जॉइंट इन्वेस्टमेंट की जाएगी 6 की एरियाज़ के अंदर: वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के अंदर। इसमें कोई मिलिट्री एंगल नहीं है, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया, लेकिन हाँ, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन किया जाएगा। अब इस समिट में कहा गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, लो कार्बन डेवलपमेंट करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ में, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए हम जॉइंटली इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डालेंगे एक दूसरे की कंट्री में, ठीक है। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उसको हम प्रमोट करेंगे। फिर जो है आपका फूड सिक्योरिटी क्राइसिस या क्लीन एनर्जी से डील करने के लिए डाइवर्सिफाइड फूड प्रोडक्शन और फूड डिलीवरी सिस्टम्स को जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। और एक हमारा जो है यूएई और यूएस ने नवंबर 2021 में एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। उसको भी इंडिया ने इस I2U2 समिट के अंदर ज्वाइन किया है। अब इससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हंगर को डील करने के लिए जो है ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिसको भी इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। अब फूड सिक्योरिटी के लिए यूएई जो है वो इंडिया में $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, ताकि फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया वो बनाए जा सकें। अब इसके अंदर क्या होगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, ताकि फार्मर्स को भी इंटीग्रेट किया जा सके इन फूड पार्क्स के साथ। और मोटिव ये है कि इस इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमाइज़ की जा सके क्रॉप यील्ड्स और फूड इनसिक्योरिटी जो है साउथ एशिया और मिडल ईस्ट की, उसको टैकल किया जा सके। अब क्लीन एनर्जी के लिए है आपके I2U2 ग्रुप जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया के गुजरात में जो है 300 मेगावाट्स का विंड और सोलर कैपेसिटी प्लांट लगाया जाएगा विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऑफ कोर्स। और यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो $330 मिलियन जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी। इवन इंडिया की प्राइवेट कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इंटेलेक्चुअल हेरिटेज इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्लान किया है, जिसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगी। अब इसमें होगा क्या कि कैसे हम न्यू इंडिया को कैसे बना रहे हैं, डेवलप कैसे कर रहे हैं, नॉलेज रिसोर्सेज उसके लिए हमारे पास क्या है, वो सब जो है एक तरह से शोकेस किए जाएंगे। डायलॉग्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, पब्लिकेशन, ये सब प्लान किया गया है वाया सेवरल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। अब इसके फीचर्स क्या हैं? 100 सर्च कॉन्फ्रेंस होंगी 100 थीम्स के ऊपर, जिसमें रिसर्च पेपर्स भी दिखाए जाएंगे, और रेप्यूटेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और वो इन रिसर्च पेपर्स पे कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी को दिखाने के लिए कि इंडिया कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो फोकस करेगी। कैसे हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट ईयर रहा है, जीएसटी हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, आत्मनिर्भर भारत क्या है, ऐसे ऐसे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इनिशिएटिव्स को शोकेस करेगी। ऐसे ही कल्चर मिनिस्ट्री जो है हमारे कल्चर के बारे में बताएगी कि कैसे हमने हिस्टोरिकल साइट्स को जो है रिस्टोर किया। 150th बर्थ एनिवर्सरी हम महात्मा गांधी जी की कैसे बना रहे हैं, जलियांवाला बाग के बारे में बताएंगे। ऐसे बहुत सारे जो है इनिशिएटिव जो कल्चर मिनिस्ट्री ने लिए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर जो है आपकी IT मिनिस्ट्री है वो जीवन प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उमंग ऐप, इन सब के बारे में बताएगी। UPI जैसे खासकर जो है ऑफ कोर्स इनिशिएटिव्स के बारे में बताएगी। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव उनका कौन सा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर समग्र शिक्षा जो आपका, जिसके अंदर आपका राइट टू एजुकेशन भी आ जाता है। फिर निपुण भारत
ये सारा का सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने लिए प्लान कर रही है। फिर ऐसे अलग अलग और मिनिस्ट्रीज़ लगा लो आप, जैसे कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दिव्यांगजन्स के बारे में बताएंगी कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपने इनिशिएटिव्स बताएगी। ऐसे करके जो है इनिशिएटिव्स और इसके ऊपर जो रिसर्च पेपर्स हैं वो प्लान किए गए हैं इन कॉन्फ्रेंसेज में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू रिपेयर। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, कहा जा रहा है कि वो राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है, जिससे कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जैसे आपके फ़ोन्स हैं, कार्स हैं, उनको आप खुद ही फिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि आप जो है कंज्यूमर आप परचेज़ करते हो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लेकिन वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। कंपनीज़ जो हैं चाहे जानबूझकर बट उसको जो है धीरे धीरे स्लो करने लग जाती हैं, और ताकि आप न्यू प्रोडक्ट्स उनके खरीदो। तो इसमें होता क्या है कि उनकी जो सर्विसिंग है वो भी बहुत महंगी होती है, क्योंकि उन्होंने क्या है, मोनोपली की हुई है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जांपल लेते हैं, एप्पल का कोई प्रोडक्ट है, आप उसे खुद खोल कर आप उसे कहीं बाहर से थर्ड पार्टी से सर्विस नहीं करा सकते, और अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, और आपको उसके ओरिजिनल पार्ट्स भी एक्चुअली बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको नकली पार्ट्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसीलिए राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो है वो कहती है कि जो कंज्यूमर है वो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट का पूरा ओनर होना चाहिए। जो है कंपनी जो है उसको उसके स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए, अगर वो बाहर थर्ड पार्टी से किसी से रिपेयर कराना चाहता है या खुद भी रिपेयर करना चाहता है तो ये राइट जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज हो चुका है, यूएस में, यूके में, यूरोपियन यूनियन में। इवन यूएस का जो फेडरल ट्रेड कमीशन ने तो कहा कि ये अनफेयर है, एंटी कम्पेटिटिव है, अगर आप जो है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं स्पेयर पार्ट जो है वो उपलब्ध नहीं करवाते हैं कंज्यूमर्स को। तो टेक कंपनीज़ क्या आर्गूमेंट देती हैं, वो कहते हैं कि इससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसर्न हो जाएंगे। अगर आप थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को ओपन करना शुरू करेंगी तो उससे जो है प्राइवेसी के कंसर्न हो जाएंगे। लेकिन इसको जो है किसी भी कंट्री ने ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं किया है इस आर्गूमेंट को, बट और उन्होंने राइट टू रिपेयर जो है वो दिया है। अब इंडिया में राइट टू रिपेयर के क्या स्टेटस है, तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कहता है कि मोनोपोली ऑन रिपेयर जो है वो कस्टमर के राइट टू चूज़ को जो है इन्फ्रिंज करती है। इवन हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सील कार्स लिमिटेड केस में कहा है कि जो ऑटोमोबाइल रिपेयर यूनिट्स हैं उनको अगर आप एक्सेस नहीं दे रहे हो कंज्यूमर को, तो वो आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एक तरह से ये राइट टू रिपेयर एक तरह से ज्यूरे राइट टू रिपेयर हमने दिया है, या फिर आप कह सकते हो डी फैक्टो, इसको आप डी फैक्टो कह सकते हो। डी ज्यूरे तो अभी तक नहीं हुआ है, बट अब डी फैक्टो हमने राइट टू रिपेयर जो है कंज्यूमर्स को दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर ई नैम। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर ई नैम को जो है इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु में। तो अब इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ई नैम के अंदर सेवरल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको कंबाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो इसलिए इसका नाम पीओपी रखा गया। तो फार्मर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि अपने वो प्रोड्यूस को आउटसाइड देयर स्टेट बॉर्डर्स बेच सकें, ये प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स बनाया गया है। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को डिजिटल एक्सेस मिलेगा। अभी वो क्या करते हैं, चाहे वो डिजिटाइज्ड हैं, लेकिन वो अपने मंडी के रूल्स को फॉलो करते हैं ई नैम पर भी। लेकिन अब जब ये प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स उनको मिल जाएगा तो उनको मल्टीपल मार्केट्स, बायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो सब मिल जाएंगे, और वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लिए कंपोजिट सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस सर्विस के अंदर, ताकि फार्मर्स को जो है वो आसानी हो सके अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। तो अब एक्चुअली ई नैम है क्या, तो एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। जैसे आपका अमेजोन होता है या आपका फ्लिपकार्ट होता है, वैसे एक ट्रेडिंग पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने, जिसमें सारी एपीएमसी मंडीज़ को इकट्ठा कर दिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा कर दिया है। अब उन सारे प्लेटफॉर्म को जिनको इकट्ठा किया उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स बना दिया गया पीओपी, ठीक है। तो एक्चुअली ई नैम एक सिंगल विंडो सर्विस है, जिसमें जो है फार्मर्स अपने जो है आपकी कंट्री वाइड जितनी एपीएमसी मंडीज़ जो ई नैम से एसोसिएटेड हुई हैं या जो अपने आप को रजिस्टर किया जिन्होंने ई नैम पे, उनके साथ जो है बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं फार्मर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होती है और इन्फॉर्मेशन इरेगुलरिटी भी खत्म हो जाती है। फार्मर्स को दिखेगा ऑनलाइन कि क्या प्राइस मिल रहा है, और वो अगर आप उनको लग रहा है कि उनका, समझ लो कोई हरियाणा के फार्मर है और उनको लगता है कि उनको तमिलनाडु में अच्छा प्राइस जो है वो मिल सकता है, तो वो वहाँ पर बेच सकते हैं अपनी क्रॉप्स को, ठीक है। तो ये ई नैम जो है एक तरह से इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
पोडू कल्टीवेशन। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में डिसाइड किया था कि जो लैंडलेस नॉन ट्राइबल फार्मर्स, याद रखो नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको पेरिफेरल एरियाज में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो अपोजिशन का पार्टी है बीजेपी, उन्होंने जो है कहा है कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे राइट्स ऑफ आदिवासीज जो है वो एक तरह से इम्पिंज हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रोटेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो पोडू लैंड इशू है क्या? तो पोडू का क्या होता है? पोडू कल्टीवेशन क्या होती है? आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? जिसमें आपके आपने एक जगह पर फार्मर ने कल्टीवेशन की, तो उसको जो है रिकवर होने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उस लैंड पर दोबारा कल्टीवेशन नहीं करते, वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर वो ग्रास को क्लियर करेंगे, उस जगह पर फिर वो कल्टीवेशन अगली शुरू करते हैं। फिर जब वहाँ पर कल्टीवेशन करके उन्होंने हार्वेस्टिंग कर ली, फिर उसको कट करके वो दूसरे किसी लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके जो ट्राइबल्स हैं, अगर तो वो कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन को या पोडू कल्टीवेशन को प्रैक्टिस, तो तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है कि ओके, उनको करने दे सकते हैं, क्योंकि उनके ट्राइबल राइट्स हैं वहाँ पर, वो पिछले 30-40 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसा। लेकिन जो नॉन ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट लैंड में जाकर बस गए हैं, उनको जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको आप शिफ्ट करके पेरिफेरल एरियाज़ में बसाना चाहते हैं, ताकि जो डीप फॉरेस्ट हैं उसमें जो आपके डिफॉरेस्टेशन ना हो, ठीक है। क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए लार्ज स्वेथ्स ऑफ लैंड चाहिए ना, आपको बार बार जो है लैंड बदलना पड़ रहा है हर बार आपको, हर सीज़न बाद, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन होती है उसके लिए। तो उसको बचाने के लिए जो है नॉन ट्राइबल एरियाज़ को, नॉन ट्राइबल फार्मर्स को शिफ्ट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्लान किया, ठीक है। अब ट्राइबल फार्मर्स को तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको तो है बल्कि लैंड ओनरशिप टाइटल्स मिल जाएंगे, और जब नॉन ट्राइबल फार्मर्स चले जाएंगे तो उनके पास ज़्यादा लैंड बचेगा ये जो आपकी पोडू कल्टीवेशन करने का। जो नॉन ट्राइबल फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको लैंड बाहर, फॉरेस्ट के बाहर दे देते हैं, अब वहाँ पर आपको हम लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट्स भी देंगे, पावर और वाटर सप्लाई भी देंगे, राइतु बंधु बेनिफिट्स भी देंगे, और इवन फार्म इंश्योरेंस स्कीम्स भी देंगे, लेकिन आप फॉरेस्ट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is I2U2 summit. So you know that on the 14th of July, the first leaders summit of I2U2 was held, but it was held virtually. So currently, there has been, as of now, there has been no in-person summit of I2U2. Okay, so what is I2U2? It's a diplomatic group of India, Israel, UAE and the United States, and this term or this moniker was formed by US Secretary of State Antony Blinken. So when the first virtual meeting of foreign ministers of these four countries took place in 2021, this moniker was introduced by Secretary of State Antony Blinken. Okay, so it's an international forum for economic cooperation. Some people are calling it informally as West Asian Quad or New Quad or Middle Eastern Quad, but it is not a defense cooperation, or it is not meant for defense cooperation, but of course it has an element of maritime security also. But what are the key areas of cooperation? So they have, these countries have focused upon energy cooperation, trade, coordination on vital shared interests, and combating climate change. So these 6 joint areas have been identified: water, energy, transport, space, health, and food security. And this first leaders summit of I2U2 has been focused upon it. It does not have a military angle, but of course, like I've told you earlier, that maritime security will be focused upon. So what are the highlights of this year's summit? So the countries have encouraged joint investments in 6 mutually identified areas, like we have discussed above, and the aim is to mobilize private sector capital and expertise to modernize infrastructure, low carbon development of our industries, improve public health, promote the development of critical emerging and green technologies also. So meeting was also focused upon diversifying our food production and food delivery systems, so that we can deal with the food security crisis that is looming upon our world. And there is also an initiative, which is actually an initiative which was jointly launched by US and UAE in November 2021, and it's called the Agriculture Innovation Mission for Climate Initiative. So this initiative aims to address climate change and global hunger, and India has also joined this initiative in this very summit. So what are the initiatives which have been announced? Of course, UAE will invest $2 billion in India
to establish a series of integrated food parks across the country, and it is aimed to ensure food security. So it will incorporate state-of-the-art climate-smart technologies, and US and Israeli private sector companies will also lend their expertise to it, so that farmers can be integrated to these food parks also. So these investments are going to help maximize crop yields, and it will also help us to tackle food insecurity in South Asia and Middle East. So apart from that, US Trade and Development Agency will be funding a $330 million project in Gujarat, whereby a hybrid renewable energy project carrying 300 megawatt of wind and solar capacity will be installed, and even Indian private companies are keen to participate in this project. So the next topic is new intellectual heritage project. So Union Education Ministry is planning to create an intellectual heritage and development project. So whereby a certain dialogues, documentation, and research programs are being planned via several ministries of the government, and the plan is to focus upon these several themes through dialogues, documentation, research, and publication. And the plan is to, of course, hold about 100 conferences on 100 themes, whereby several ministries will showcase their progress report and research papers based upon which they have taken decisions. Even the reputed higher educational institutions will contribute to these papers. And let's take the examples. What kind of focus areas have been identified by the Education Ministry? Like for Finance Ministry, Education Ministry is suggesting that they can showcase their how India has become the fastest growing economy, how we broke our export record this year, how GST was implemented, what is Atmanirbhar Bharat program, etc. So even for Cultural Ministry, they have certain suggestions like how they restored the historical sites, how our cultural history is being brought back home, what are how India is paying tributes to our great freedom fighters, etc. Okay. Similarly, for IT Ministry, certain suggestions are there like Jeevan Praman Patra. This initiative has been launched by them. Ayushman Bharat Digital Mission, UPI, Umang App, all these will be showcased, and the research papers regarding that will also be showcased in these conferences. For Education Ministry itself, National Education Policy, Samagra Shiksha Abhiyan, Nipun Bharat Abhiyan, all these schemes and the research related research papers and publications will be discussed. So similarly, the same is being planned for Sports Ministry and Social Justice Ministry and even Tribal Affairs Ministry. So the next topic is right to repair. So Union government is working upon a framework to give right to repair to the consumer, so that they can fix their own products by themselves, okay, or through the third parties. So currently what is happening is that when you purchase an electronic gadget, you know that it will very quickly become obsolete, because the manufacturer does not give you the right to repair the product itself, because right to repair the product yourself. So why? Because they hold monopoly over the spare parts. You have to take your Apple's mobile phone to only Apple service center. You cannot get it repaired outside with original or genuine Apple spare parts. So this is what right to repair is going to give you. They will force these companies, Apple, Samsung, or whatever. Okay, I'm not going into the specific companies only. So these companies will be forced to give their spare parts in open market. So in case if you want to repair your product yourself, you can do it by purchasing the product from the market, and you can open the product and get it repaired. Or you can also go for cheaper options like third party service providers who will be repairing your product on in lieu of certain charges. So basically it is going to break the monopoly of these consumer electronic product manufacturers, so that this real competition can be imparted into this business. So currently what is happening is that you are the owner of the product, but you are not the complete owner. The actual product manufacturer is currently holding some form of rights, so that the full consumer rights are not transferred to you. Okay, so what is this right to repair movement? It is advocating the right
of consumers to be able to repair their own electronics, so that companies start making spare parts, tools, and informations regarding how a consumer can repair the product on its own. So it has been recognized in many countries, like even the US Trade Commission says that the manufacturers have to remedy unfair anti-competitive practices, and they have to allow consumers so that they can make repairs. Okay, either by themselves, of course, or by third parties. But the tech companies, they are adamant. They are saying that security and privacy concerns may emerge if products based on technology patented by them are opened by third parties or by the consumer themselves. But this argument has not been accepted by any of these countries where this right has been recognized. And now this right will also be legally of course, this right is legally recognized, but there is no framework to implement this right as of now. How this right has been legally recognized in India? Your Consumer Protection Act of 2019 says that the monopoly on repair infringes the consumer's right to choose. So it has been legally recognized, but currently we do not have the framework to implement this act. Even the Competition Commission of India, in Shamsher Kataria versus Honda Seal Cars India Limited case, ruled that restricting the access of independent automobile repair units to consumer is anti-competitive. So it is also a form of right to repair. So we have this right already, but the framework is missing. So this is what Union government is planning. The complete framework will be given to you as to how you can exercise this right. Okay. So the next topic is platform of platforms under ENAM. So Agriculture Minister has launched this platform of platforms, and under the, of course, the National Agriculture Market Project, and farmers will be benefited because they will be able to sell their produce outside their state borders. You know that what is ENAM? So ENAM is basically an aggregation of APMCs. Currently these APMCs are ruled by states, but they have been digitized and they have been put, all these platforms of or APMCs have been put under ENAM. But this platform, a single platform has been made now, so that's why it is being called platform of platforms, POP, because all these APMC mandis have also been digitized into a single window, so through which farmers will be able to sell their product outside state borders. So they will have access to multiple markets, buyers, and service providers, and it will also bring transparency in their business transactions. So what is this ENAM? So ENAM is a pan-India electronic trading portal, and it is linking the agriculture produce market committees or mandis, which are currently being governed by the respective state governments. So basically the aim is to provide a single window service, and to provide this single window service, this POP has been planned. So once this comes into picture, it will reduce the transaction cost and information irregularity. Farmers will be able to access more and more markets. If a farmer is getting more price, let's say a Haryana farmer is getting more price in Madhya Pradesh, then he would be, of course, selling the product to Madhya Pradesh. So that's why this ENAM was envisioned, and this POP, the platform of platforms, is materializing that project. Okay. So the next topic is Podu cultivation. So you know that Telangana government decided to in 2021 to move landless non-tribal farmers. Remember this, non-tribal farmers who were engaged in shifting cultivation inside the forest lands to peripheral areas. You know that currently the tribals, of course, they participate in this shifting cultivation, or Podu, which is, of course, the Telugu name, and they are entitled to do it because they have been doing it for the last 30-40 years, or more than that, of course, also. But these non-tribals, they have moved into forest areas, and they have started doing this Podu cultivation. So what is happening because of it? Deforestation. You know that what shifting agriculture is. You clear a land. Let's suppose that this season you have sown paddy. So you will not sow paddy on the same land for the next season, because you are giving rest to that land so that it can recuperate itself. So you move on to another piece of land. Similarly, you move to another piece of land after that season. So basically it is shifting cultivation. You are shifting the land for your cultivation. So it is progressive. It is basically degrading large swathes of land if it is practiced in the forest, then of course deforestation is happening. Because if you keep on shifting your land for cultivation, you are, of course,
deforesting. Okay, so government wants to reverse this trend, and it wants to prevent the cultivators to move deep inside the forests. And now what is being planned, of course, the tribals, they would not be affected because they would be given land ownership titles, and they would be able to practice this podu cultivation. But the non-tribal farmers, they are being incentivized that so that they can move outside the forests. They will be given land ownership certificates, power and water supplies, Raitu Bandhu benefits, and even farm insurance schemes, so that these non-tribal farmers, they can move outside the forest, so that the government can ensure that the deforestation trend can be reversed. Okay, so this is why this initiative was launched by Telangana government. But now, of course, the opposition parties want to politicize it at the time of elections. So that's why they are protesting against it. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.